Good morning students, welcome again. In previous video I had explained you English lesson number 2 the story of Medusa and Athena page number 18. Yes, मैंने आपको ये page number 18 explain किया था, right? So what we have seen on this page, who is there in our story? There is a young maiden called Medusa and she was of boastful nature. She used to brag about herself. It means वह अपने बारे में ही बार बार क्या करती थी, अपने बारे में ही बताती थी that she has a beautiful skin, hair, eyes and lips. One day she visited to a temple, Parthenon. It is a big temple. It is the largest temple of goddess Athena, the goddess of wisdom. Everyone in the temple was very awed. It means very impressed by the temple because of temple's beauty, because of the sculptures and paintings. But Medusa, what she said, that this beautiful temple is wasted on goddess Athena. Why? Because she thinks she is much prettier, she is much beautiful than the goddess. So students, now come to page number 19. Page number 19. Let's continue again. Medusa's friends grew pale and priest gasped when they heard her. People began to leave the temple as they feared what might happen if the goddess had overheard Medusa's rash remarks. So what do you mean by friends grew pale? It means friends का mood कैसे हो गया? Off हो गया. And priests, they gasped. Gasped means catch one's breath with an open mouth. Means they felt like, what is this? What this girl said. People began to leave the temple and they began to leave the temple. Why? Because they were thinking that if goddess Athena had heard Medusa's words, what would be the result? Students, what do you mean by rash? Rash means saying or doing something quickly without thinking about what will happen as a result. So in our story, Medusa, did she think anything here and there? She directly said that the beautiful temple is wasted on goddess Athena because she looks much prettier than the goddess. And without thinking any conclusions, she just said this remark for the goddess. All this while, Medusa was busy gazing proudly at her reflection in the large bronze doors. ये सब बोलने के बाद भी मेड्यूसा का ध्यान था क्या? Was she there attentive? No, she was busy. Busy in what? Busy in gazing proudly. वह अपनी ही डोर पे रिफ्लेक्शन देख देख कर she used to happy. She used to admire herself only. Suddenly her reflection wavered and the face of goddess Athena appeared in front of her. So, while gazing, yes, you can see here a door. मेड्यूसा क्या कर रही थी? डोर में अपना फेस देख रही थी एंड ऑल ऑफ सडन मेड्यूसा का रिफ्लेक्शन हटकर किसका फेस आ गया? गॉडेस एथेना का फेस आ गया. गॉडेस एथेना सेड एंग्रीली. नाउ गॉडेस इज इन एंगर. She said, "You foolish girl, you think you are prettier than I am? I doubt it. And even if it were, there is more to life than beauty alone. While others work, play and learn, you do nothing but boast and admire yourself. You should have your heart in the right place." So what happened? When Medusa was busy in gazing herself in her reflection in the doors, at that time her reflection disappeared and the goddess Athena's face was appeared in front of her. क्या हो गया? इसकी रिफ्लेक्शन हटकर किसका फेस आ गया? गॉडेस एथेना का. What did goddess Athena said? She said, "You foolish girl, did you think you are more prettier than me?" गॉडेस क्या बोले? तुझे रियली ऐसे लगता है that you are more beautiful, more good looking than a goddess? She said, goddess said, if you are beautiful then it's okay, but there is only beauty in our life. अगर कोई girl or some person is looking beautiful, is it okay? Is there any other work in her life or in his life? Like that she says to Medusa. Others are working, others are playing, others are learning. But you, Medusa, you just keep busy in looking at yourself only. You are always busy in boasting yourself only. You are always busy in admiring yourself only. You should have your mind and heart on the right place.
But my beauty is an inspiration to others and I make their lives better by simply looking lovely, justified Medusa. What do you mean by justified? It means Medusa has given some explanation or excuse. Medusa क्या कर रही है? अपने words को justify कर रही है. She is giving an explanation to whom? To goddess Athena. That what she do other than work, play and learn? What Medusa do? She is just an inspiration to others. वो क्या बोलती है? मेरी ब्यूटी दूसरों के लिए इंस्पिरेशन है. Goddess Athena silenced her with a frustrated wave. Nonsense, retorted Goddess Athena. What do you mean by retorted? It means to say something in an answer to a remark in an angry manner. So मेड्यूसा के आंसर को, मेड्यूसा के जस्टिफिकेशन को गॉडेस एथेना ने कहा नॉनसेंस, दिस इज नॉनसेंस थिंग्स. ब्यूटी डज नॉट कम्फर्ट द सिक, टीच द अनस्किल्ड और फीड द हंग्री. व्हाट डिड गॉडेस सेड? कि ब्यूटी से कुछ हो सकता है क्या? कैन ब्यूटी कम्फर्ट द सिक? कोई बीमार इंसान को ठीक कर सकता है? नो. टीच द अनस्किल्ड, जिसे कुछ नहीं आता है उसे कुछ सिखा सकती है क्या ब्यूटी? नो. या किसी भूखे इंसान, हंग्री इंसान को खिला सकती है क्या हमारी ब्यूटी? नो. एंड बाय माई पावर योर ब्यूटी शैल बी स्ट्रिप्ड अवे कम्प्लीटली. दिस विल बी अ रिमाइंडर फॉर अदर्स टू कंट्रोल देयर प्राइड. व्हाट डिड गॉडेस सेड? नाउ बिकॉज ऑफ माई पावर व्हाट विल हैपन? मेड्यूसा की ब्यूटी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी. एंड सबके लिए क्या मिलेगा? एक प्रॉपर क्या मिलेगा? सबको एक प्रॉपर लेसन मिलेगा. डैट देर इज नथिंग इन ब्यूटी, यू शुड कंट्रोल योर प्राइड. मतलब हमें हमारा घमंड, हमारी जो तारीफ, जो एक्स्ट्रा बूस्टफुल नेचर है, वी शुड हैव कंट्रोल ओवर इट. एज सून एज गॉडेस एथेना हैड अटर्ड दिस वर्ड. व्हाट डू यू मीन बाय अटर्ड? टू से. एज सून एज गॉडेस एथेना हैड सेड दिस वर्ड्स, Medusa's face changed to that of hideous monster. What do you mean by hideous? It means very ugly or unpleasant. जैसे ही goddess Athena ने ये कहा that as because of my power your beauty will be stripped away. It means तुम्हारी beauty खत्म हो जाएंगी. Why? Because goddess Athena said ना, God ने कहा that your beauty will be over. It means it will be over. And what will be the lesson for others people? टू कंट्रोल देयर प्राइड. अपने घमंड को हमें क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए. वी शुड नॉट ओवर इन अवर नेचर और ओवर बूस्टफुल फॉर अवर नेचर. सो एज दिस वर्ड्स अटर्ड बाय गॉडेस, जैसे ही गॉडेस ने ये कहा, मेड्यूसाज फेस चेंज टू दैट ऑफ हाइडियस मॉन्स्टर. स्टूडेंट सी इन द पिक्चर. पहले मेड्यूसा कितनी ब्यूटीफुल थी एंड जैसे ही ऐसे कहा गॉडेस एथेना ने, हर फेस इट चेंज टू अगली. शी बिकेम अगली. हर हेयर ट्विस्टेड एंड थिकेंड टू हॉरिबल स्नेक्स दैट हिस्ड एंड फाउट ईच अदर अटॉप हर हेड. एंड उसके हेयर्स, उसके लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर्स कैसे बन गए? इट बिकेम स्नेक्स. यू कैन सी. और सारे के सारे स्नेक कैसे थे? दे आर लाइव स्नेक्स. इट मीन्स सही के सच्ची में स्नेक्स थे. एंड व्हाट दिस स्नेक्स डू? दे फाइट बिटवीन देमसेल्व्स ओनली. सारे के सारे स्नेक्स एक दूसरे से फाइट कर रहे थे. मेड्यूसा, दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर प्राइड. योर फेस इज सो टेरिबल दैट एनी मैन हु सीज यू शैल टर्न इनटू स्टोन. प्रोक्लेम्ड गॉडेस एथेना. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोक्लेम्ड? अनाउंस्ड. प्रोक्लेम्ड मतलब गॉडेस एथेना ने क्या अनाउंस किया? कि जैसे ही तुम्हारा फेस किसी ने देखा था या किसी भी पर्सन ने, एनी मैन यू सी और एनी मैन विल सी यू विल टर्न इनटू स्टोन. अगर किसी ने भी मेड्यूसा का फेस देखा तो वो क्या हो जाएगा? स्टोन का हो जाएगा. इवन यू शैल टर्न इनटू स्टोन इफ़ यू सी योर रिफ्लेक्शन. और मेड्यूसा खुद क्या बन जाएंगी? स्टोन बन जाएंगी. वाई? बिकॉज इफ शी सीज हर रिफ्लेक्शन. मेड्यूसा का बहुत हैबिट थी ना, अपना रिफ्लेक्शन देख के खुश होती थी, अपने आप में ही गुम हो जाती थी. राइट? वैसे ही गॉडेस ने क्या कहा? इफ़ यू सी योर रिफ्लेक्शन यू विल ऑल्सो बिकम स्टोन.
And with that, goddess Athena left, leaving Medusa weeping and in shock. और वैसे कहकर क्या हो गए? Goddess Athena, she disappeared, and goddess Athena was disappeared, and Medusa was weeping. Weeping means she was crying. So students, here we are ending up with our story, the story of Medusa and Athena. Can you tell me, हमने ये इस स्टोरी से क्या सीखा? What we have learned from this story? Like we should be boastful like Medusa? No. We should keep our mind, our heart in our control. We should be never of boastful nature. Whatever we got or whatever we have, we should thank to God. That God has given us very beautiful things. A beautiful face, a beautiful life. Yes or no? हमें कैसे होना चाहिए? We should be thankful to God whatever we are having. Or we should be like Medusa? No, we should never be like Medusa. So students, you have to read this story once again. Okay? Bye bye. I hope you have enjoyed this story. Bye bye.